If I am born again, I'll request God to give me again the life of a Fauji. Those were the days when China was gradually, entering into Tibet. What is the biggest leadership lesson you've got through your military life? The best part of armed forces is, what they call cut the flab. सबसे पहले तुम्हारा देश, उसके बाद तुम्हारा साथी, फिर उसके बाद तुम खुद. Evening 7 o'clock, 7:15, the moment bar opens. Put on your whites, tie, sit down on the counter and khatak, one drink. The feeling of being in uniform and being on the, tarmac or being in your unit or being in your office. I mean, that feeling, it cannot be described. चरवाहे ने आके बोला था कारगिल वॉर से पहले कि मुझे उधर से कुछ दिख रहे हैं कि कोई लोग 4-5 लोग आ रहे हैं. इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यू हैव टू लिटरली, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी जान हथेली में लेके यू हैव टू गो. नाउ देयर आर एरियाज के अगर आप वहां दिन में भी चले जाएंगे, यू विल फील स्केयर्ड. सो यू वांट टू बी वेरी केयरफुल. समबडी हैज टू फॉलो यू, समबडी हैज टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ कवर, अदरवाइज यू नेवर नो हु इज गोइंग टू हिट यू फ्रॉम वेयर. एक बड़ी सिंपल चीज है लाइफ में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. इट्स ऑल विद इन यू. इन फौज देयर इज नो इफ, नो बट, ओनली जट. दैट्स ऑल. जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम कहते हैं, संकल्प से सिद्धि तक जाना पड़ता है. लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो विद द फ्लो नहीं, अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा. गुजरात में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पे कोई यंगर जनरेशन है ही नहीं. I would appeal to all the young boys and girls listening to me that you must join Indian Army, Air Force or Navy. Hello guys, welcome to Unseen X. कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. इस बात को सच साबित करने वाले आज हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन राजेश मोहन and Air Force veteran who has served for 36 years as a commissioned officer in the Indian Air Force. आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है एंड ये पर्सनली बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए भी. आज हम बात करने वाले हैं उनकी जर्नी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर इन दी एयर फोर्स एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हमारे पास आज आने वाली हैं. हम ऑल्सो बात करने वाले हैं उनकी सेकेंड इनिंग्स की एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. कहते हैं ना कि अ सोल्जर नेवर रिटायर्स. सो ये बात भी उन्होंने सच साबित करी. आफ्टर रिटायरिंग ही हैज़ बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड हैज़ बीन इंस्पायरिंग मैनी लाइव्स. तो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है एंड आई होप कि आप एंड तक जुड़े रहें हमारे साथ. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द शो. जय हिंद सर. सबसे पहले तो वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर ओवर हियर. एंड सर, आप जैसे शख्स आते हैं जब पूरी टीम के अंदर जोश आ जाता है. आई हैव हर्ड दैट अ सोल्जर नेवर रिटायर्स. You served in the Indian Army for 36 years and now you're a motivational speaker and now also you're inspiring so many lives, sir. Congratulations on that, sir. Thank you so much, Uday, and Jai Hind to you. I served in the Indian Air Force for Right. 36 years, And as you rightly said, Josh, तो Josh, Himmat or Prakram, these are the second names of our armed forces, You must have seen that movie, in which there was a young officer, somebody who was acting as a young officer, and he kept on asking, how is the Josh? He asked in the movie, with this happens with us every day, Right, sir. So thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Uday. So it's our honor, sir. Sir, first of all, starting mein I would want to ask you, you served for 36 years in the Indian Air Force. You were a commissioned officer. That's right. So tell me about that first, सबसे पहले तो. Uday, I got my commission through Air Force Academy, Hyderabad in 1980. And I retired in 2015. Okay. So this plus my training period, if you combine, it is 36 years, Well, all I can say is when I look back, it has been the most wonderful phase of my life, If I am born again, I'll request God to give me again the life of a Fauji, Right. It has been a very, very thrilling life and a lot of exciting things, new opportunities, new challenges, new targets.
So in a nutshell, I can say it's been a wonderful life, for 36 years. राइट सर यूजुअली पता है क्या होता है जब कोई गेस्ट आता है ना यूजुअली दे कम 15 मिनट्स लेट बट यू केम 15 मिनट्स अर्ली सो आई कैन फिगर आउट लाइक द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू मस्ट बी हैविंग फॉर ऑल दीज इयर्स देखो दे ऐसा है that as a air veteran and now as a motivator, most important thing as far as I am concerned is discipline, राइट and punctuality is, I'll say, the backbone of discipline, True. And I strictly follow it myself, request everyone to follow it, because I personally feel, that time is the most valuable asset which we have with us, Right. and we must not waste it. राइट That's how it is. So tell me about your early days in army, like how they used to be, and about your posting also. I just want to start from the beginning, basically. All I right. want to know you. Okay. That's the motive of our podcast, to know Captain Rajesh Mohan, Group Captain Rajesh Mohan. That's right. Right. I was born and brought up in Haryana, and 1980 I got my commission, My first posting was to a place called Belgaum in Karnataka, which was a wonderful place, wonderful place. And it was in the year 1984, I mean, just 4 years after my commissioned service, that I was selected by Indian Air Force to do the Chinese interpretership course at School of Foreign Languages, which was at Lodi Road during those days. Okay. So this is a combined course for Army, Air Force and Navy, a very prestigious course. And I was lucky enough to be selected for that. And I did that, Wow. I mean, for nearly 3 years, I learned Chinese Mandarin. And after that, most of the tenures after that, they were onto what they say, the intelligence side, Okay. working mainly on the China desk and working with the other agencies, int agencies and all that. Okay. I must tell you, my role as an interpreter was that we have something called a China desk, Okay. It is, you can say, a nodal center from where, most of the information about China we collect and then we share, So as a young officer, I was posted there. And those were the days when China was gradually, entering into Tibet. Okay. So Sorry, sir. Which year was it? this was in 1984-85. Okay. Acha. I mean, so, my main job was at that time, and they were dropping a lot of these pamphlets and leaflets from the aircrafts, which were going down. That was a way of sort of, what they call, misinformation warfare, Right. So these pamphlets, they were in Chinese. They used to come to us. We used to interpret them, translate them, pass them on. So keeping the official secrets act in mind, I can only disclose this much. Right. Then, working with Chinese delegations, having a lot of beautiful Chinese food with them, some clear, lovely soups. So these are some of the earlier memories of my, Air Force days. Okay. Yeah. Right. So, like, I would want to ask you, what is the biggest leadership lesson you've got through your military life? This leadership lesson, I must tell you before that, leadership is one subject, like motivation, on which there are reams and reams of literature, Right. books. But in Forge, the best part of armed forces is, what they call cut the flab. Right. They make it so simple. So when we were in the academy, our instructors and all, they taught us a very simple thing. Leadership is the art of dropping the unessential, Okay. Oh, लंबी चौड़ी background, लंबी चौड़ी कहानी, ऐसे होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा. Cut it out. Right. Just talk about what is your mission, what is your strategy to accomplish that mission. Right. Just do the right thing. Just do the What's right needed. thing. Just, वो अर्जुन की तरह आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए.
hit bang on the target. So for me, leadership is nothing but caring about your men, your team, your squadron, your unit, or your people, and giving them brief, crisp and actionable instructions. Right. Not वो लंबे लंबे ज्ञान देने के ऐसे होगा तो वैसे होगा, no. So that is what was taught to us. राइट Yeah. सर, क्योंकि फौज में ऐसा भी कहा जाता है आर्मी में कि सबसे पहले तुम्हारा देश, उसके बाद तुम्हारा साथी, फिर उसके बाद तुम खुद. You know, it is a wonderful affirmation or a pledge, which every Fauji takes. राइट. And not only takes that, we live it up every day of our life. And वो इतना आपके DNA में घुस जाता है that you Right. live whole of your life like that. राइट. Obviously, nation first. That is number one. Number two, the comfort, the happiness of the troops I command, my men, my colleagues, my fellow officers, my juniors. And last and the least, your own comfort, your own importance. राइट. So it's all about that. You got to look after the team. So because they train you that way in the initial days. Like I have my friends from like who are actually in NDA. So basically they tell me, so when they went they were like pretty normal, but after when they came from there they were like, हमारे अंदर से ना अब मौत का डर खत्म हो चुका है एकदम. हमें इतना रगड़ा गया है, इतना घिसा गया है कि अब मतलब हमें डर ही नहीं लगता मौत से. देखिए ऐसा है उदय कि यू कांट इमेजिन अ कैरियर जिसमें एक यंग लड़का 18-19 साल का जो ये हु इज कमिटिंग that I will be posted, I will go wherever I am posted by land, sea or air. So it is everyday affair with us. And once you get that feeling, that you are doing something for a very, very noble and a higher cause. और वो feeling आपको ट्रेनिंग के दौरान में अपने आप इंस्टिल की जाती है. जब एक बार वो फीलिंग आ जाती है उसके बाद यू आर लीस्ट कंसर्न्ड कि गोली यहाँ से लगेगी या वहां से लगेगी या यू आर नॉट बॉदर्ड देन ऑफ True, sir. Okay. Definitely. Yeah. So because I feel army is the way of life. It's not just a profession. You live it. Like when you meet any officer or like any army officer or any person in the Indian army, they say that हम एक एक दिन को जीते हैं. हम ऐसे नहीं, हम कल की नहीं सोचते हैं, हम बस सोचते हैं कि आज हमें क्या करना है. सो वेरी इंस्पायरिंग. उदय वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, नाउ व्हेन आई लुक अराउंड आई मीन माय ओन चिल्ड्रन, माय डॉटर, माय सन, दे आर इनटू कॉर्पोरेट जॉब्स एंड अदर पीपल कि हमारा इतना पैकेज है, हमारा ये है, हमारा वो है. इनफैक्ट आई फील हैप्पी एज अ फादर और एज एन एल्डर, बट आई पिटी देम because I see they have no time. Right. We used to, do work also. Afternoon take rest. Evenings were for PT, volleyball, football, hockey, swimming, whatever game you feel like. Evening 7 o'clock, 7:15, the moment bar opens. Put on your whites, tie shy, sit down on the counter and khatak, one drink. So that life I'll always miss. That was wonderful. Right. Wonderful life, राइट सर बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है, नोटिस करी है जितनी भी. एक टाइम हुआ करता था व्हेन बीइंग इन एन आर्मी, लोग पीपल यूज्ड टू बी लाइक वाओ, मतलब वी वांट टू गो टू द आर्मी, वी वांट टू जॉइन आर्मी, वी वांट टू बी ऑफिसर्स. बट अब ऐसा देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, लाइक in the applicants also, like not a lot of people are applying for such posts and people are moving more towards, I feel कि जब से corporate culture आया है, राइट, मतलब एक टाइम होता था हमारे पापा हमारे दादा के टाइम पे, मोर पीपल यूज्ड टू बी लाइक हाँ हम फौज में जाएंगे. Yes, I come from a family of Fauji's. Of course, my father was himself not a Fauji, but two of my uncles, my chacha, one was in the army, one was in the navy. My cousins, they are in the armed forces. What has happened is that somehow, we have now made money so important in life. Right, sir. So important that everyone is running after money, Armed forces give you a very decent life. Quality of life is wonderful.
And this decline is there because somehow, I'll blame, I won't blame, I am not the one, I never talk of negatives, I don't blame anyone for anything. But what I'll say is we are all equally responsible, the parents, the peer group, the teachers. Right. वो सारे के सारे बच्चे, मैं बहुत से सेशंस के लिए, मोटिवेशन और काउंसलिंग सेशंस के लिए मैं कोटा सीकर इधर उधर जाता हूँ. वो सब बच्चे कोचिंग में लगे हुए हैं, their necks are like this, they're bloody sleepless nights. I go to them, first I tell them कि come here, 10 push-ups लगाओ, 2 चक्कर लगाओ, and then do some punching in the air, wow, and then talk to me. Right. That josh, as you mentioned, that josh is missing. Yeah. Because parents are after them कि तुम ये बनो, तुम वो बनो, तुम वो बनो. Whereas, Forge is one of the best alternatives. And today, through this medium, I am very grateful to you. I would like to appeal to all the young boys and girls. Please try armed forces as a career. Air Force में जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना. Google कीजिए FCAT, Air Force Common Admission Test, and will give you all the information. And wonderful life you'll have. Excellent. True, sir. Sir, now coming on to you again. Air Force की हमने बात करी. So you served in the Indian Air Force for 36 years. That's right. Air Force, or for that matter, any armed forces primarily is of 2 wings. Okay. Like we have a fighter wing, and then we have what we call the ground support staff, which facilitate the operations, Right. So I was into that. And the feeling of being in uniform and being on the, tarmac, or being in your unit, or being in your office, that feeling, it cannot be described. Right. मतलब ये वो है जो कि खुद आप करके जो है ना तभी आप experience कर सकते हैं. It's a wonderful feeling. Yeah. Yes, sir. So you were, as you were talking abhi before, you were in Kargil war as well. That's right. है ना? Sir, tell me about that. Yeah, I'll tell you. My role as a officer in the intelligence branch, I was commanding a frontline intelligence unit in southwestern sector, More than this, I can't reveal. I'm bound by certain this thing. Okay. So as the commanding officer of that unit, our role was to collect as much as information from our sources and from across the border as possible, and pass it on in quickest possible time to air headquarters, so that they can plan the tactics, actionable information. If you have seen that Amir Khan ki movie Sarfarosh, you will understand what I am saying. Achha. So I was actively involved in the Kargil war, in the way that we were collecting information and we were passing it on, and on a lot of information which was collected by our unit, the outputs were very, very positive. Achha. The mission results were very good. So I am proud, that I participated. Like the information you're talking about was very accurate every time. You meant to say that? Information, like leadership is the art of dropping the unessential. Right. Intelligence is the art of, chopping off everything which is not important. Right. So a simple information, जैसे वो चरवाहे ने आके बोला था कारगिल वॉर से पहले कि मुझे उधर से कुछ दिख रहे हैं कि कोई लोग 4-5 लोग आ रहे हैं. अच्छा. So this kind of information, based on which the entire mobilization of the Indian army and all that took place, everyone realized कि yes, something is happening in that sector. अच्छा. So इस तरह की इंफॉर्मेशन जो एक्शनेबल हो, जो ऑथेंटिक हो, और जिससे हमारे कंट्री को, आर्म्ड फोर्सेस को कोई फायदा हो, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट सर. एंड सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा आपको. एट टाइम्स इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यू हैव टू लिटरली, जिसको बोलते हैं ना कि अपनी जान हथेली में लेके यू हैव टू गो, बिकॉज यू आर मूविंग इन प्लेसेस and you are operating in areas like I can name it because it's in public domain. Some places in Gujarat, Bhuj, Nalia, Jamnagar. Some places in Rajasthan, Jaisalmer, Barmer, Uttar. These are all basically the border areas, by landline or by this thing.
Now there are areas के अगर आप वहाँ दिन में भी चले जाएंगे, you will feel scared अच्छा. because you know the type of people those who are working, and these are agencies, you know, from all from the other side also, you know. अच्छा. Okay. So you ought to be very careful. Somebody has to follow you. Somebody has to give you some kind of a cover. Otherwise, you never know who's going to hit you from where. अच्छा. So, you know, that way it's a wonderful experience. Yeah. Right. In Gujarat and such places must be in the north also. Same. Yes, है नॉर्थ ना? में भी है ऐसी जगह. Right. मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारी यूनिट वाज मेनली ऑपरेटिंग इन राजस्थान एंड गुजरात. अच्छा. And all these areas were under the watch, under the jurisdiction of our unit, you know. Sir, you have any story? कोई है ऐसी कोई incident? Yes, I must tell you, you Yeah. know, one day, you know, when we used to have everyday morning briefing, we used to have, you know, and we had gone to Bhuj in Gujarat, you know, you remember जहाँ पे वो earthquake आया था बहुत जबरदस्त. हाँ. So one of my, you know, officers, in fact, my adjutant of the unit, he told me, we used to discuss कि आज का क्या मिशन है, क्या करना है. So he told me कि सर आज हमको हरामी नाले में जाना है. So I told him, what the hell is this? हरामी नाला. So I asked him back, are you joking or what? It's a serious briefing going on. He said, no sir, there is a nala. We were trying to find out that how this, you know, infiltration takes place. Okay. जैसे एक वो मूवी थी ना करीना कपूर की और अमिताभ बच्चन सन, इन विच यू नो वो उधर चले जाते हैं और से अच्छा, सलमान खान मूवी जस्ट नाउ, यू नो, बजरंगी भाईजान. अच्छा, so you had to. So ऐसे कई इनलेट्स हैं, and हरामी नाला was one of them, अच्छा. which is a नाला kind of a thing, flowing water. उसके नीचे से छुप छुप के लोग आ जाते थे. Oh. So the our side, you know, the Fauji's, they used to call it harami nala. कि यहाँ से रोज, I mean, people try to get in there. So these kind of experiences, of course. अच्छा, तो you had to go on operations, such operations, and you had to find such places also. Yes, that's right. You know, our main, you know, it's all zone based and area based. Okay. Like I'll give you a small example. If there is a SSP, say of a district, he has to take care of the entire district. Similarly, whatever area of operation is given under the jurisdiction of your this thing, उस area में अगर कुछ होगा, तो it's your duty, you know, that you have the first one to be informing, you know, your bosses or their headquarters. So that involves a lot of movement because that border is quite long, you know. We were covering around 1,700 kilometers of border. Okay. So usme the area is very vast. So most of the time, most of the unit used to be on the move only. Okay. So that is how it used to work. Yeah. Sir, have you been in any life or death situation? Yeah, as I told you, you know, when you operate in these kind of places, Right. Then you never know. That's virtually every day it's a life or death situation, and couple of things have happened, which of course, you know, for obvious reasons I can't share so openly. Okay. But you can imagine कि ऐसे था कि बस यूं लग रहा था कि अब तो चलो भाई सबको जय हिंद बोल दो और निकल जाओ. अच्छा. That kind of a situation. अच्छा. But we were lucky enough. God was kind that we still there. I'm still here in front of you. Yeah. But plenty of such, and I'm sure ये मेरे नहीं है, हर फौजी की लाइफ में ऐसे ही आते हैं challenges. So, sir, for such situations, you need mental toughness. So, tell us about that. What kind of mentality you used to have each and every day? What kind of toughness you used to, you know, maintain? Yeah. Tell me about that. Uday, I must tell you, you know, as a फौजी and now as a motivator, एक बड़ी सिंपल चीज है लाइफ में, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत. इट्स ऑल विद इन यू. और जो आर्म्ड फोर्सेस में हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, यू नो, आई रिमेंबर व्हेन एज अ कैडेट वी हैड गॉन, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, यू नो. सो वन ऑफ आवर इंस्ट्रक्टर्स, he gave us such an inspiring talk. He said, well friends, well cadets, welcome to Indian Air Force. From now onwards, you will write the story of your life with your blood, sweat and tears. Right.
इससे आगे जो अपने जीवन की जो स्टोरी लिखेंगे वो ब्लड स्वेट एंड टीयर से लिखेंगे. So that is for sure that you have to be, absolutely tough. Right. And then the second saying in Forge is Army, Air Force and Navy, that more you sweat in peace, less you bleed in Less war. you bleed in war. So हमारा तो रोज ही ट्रेनिंग, डेली ट्रेनिंग, everyone is ready every time, because कोई बता के तो कोई कुछ करता नहीं है. Right. You never know, that it may happen in midnight or it may happen on a Diwali holiday or a holy holiday, anytime. कुछ नहीं पता सर. So, You usually watch these in movies also. अभी recently एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी. Have you watched it? Yeah. उसमें उन्होंने दिखाया था like suddenly attack हो गया था. Yeah. So you have to be prepared for such situations. Yeah. आपको next moment का नहीं पता कि क्या होने वाला है. Exactly. Right? There are a lot of interesting movies. अक्षय कुमार की ये मूवी भी बहुत अच्छी थी. एक बहुत पहले, I don't know, your father must have heard that there was a movie called हकीकत, अच्छा. Dharminder and all that, and that beautiful song, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. Right. That was a wonderful movie. It was an Indo-China war. And there are series of lot of movies like this. So, of course, movies में थोड़ा dramatize ज़्यादा कर देते हैं. Right. But otherwise, like recent times, this movie came Border, Sunny Deol's movie. It's a beautiful movie. So, armed forces life is more or less like that. I'll say more or less like that. Yes. Right. But sir, now you're a motivator. You're inspiring lives. And sir, you coming from an army background, I think it's the best thing to do. Sir, मैंने हमेशा देखा है आर्मी के जो लोग होते हैं ना, जब वो मोटिवेट करते हैं तो वो अलग ही लगता है बंदे को कि मतलब जोश आ जाता है सर. तो लाइक मैंने ये भी मूवी देखी थी सर, सैम मानेकशॉ की. You're very fond of movies. Yeah, sir. Okay. Sir, Lovely. Yeah, I love them. I especially movies like which are based on army life and Yeah. I feel कि मुझे बहुत इंस्पायर करती है सर ऐसी मूवीज. Wonderful. And I am a very big fan of Sam Manekshaw also, sir. Okay. Let me tell you, sir. Yes. He's a great soldier, a Right. great soldier. Right, sir. And about Sam sir, I must salute him. Right. I just want to tell you one thing, you would have seen in movie that when the Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, calls him, and that is the time war is being planned, Yeah. she asks a simple question, Sam, are you ready? He answers, I'm always ready, sweetie. And the Prime Minister just laughs, And Right, sir. secondly, like you said, कि movies का बड़ा वो है, तो फौज में एक बड़ा simple principle है. मैं भी एक movie से ही quote करूँगा. Of course, not a war movie. Sunny Deol's movie. In Forge, there is no if, no but, only jut. That's all. So there is nothing else. You have to do or die. There is no other situation. So as a motivator, this is what I teach the youngsters. I teach the younger generation to be fearless, to be taking that, leap of faith. Right. आजकल बच्चे बहुत ज्यादा सोचना, इफ्स एंड बट्स कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, हर एक बात में कहते हो कि तो क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है. मतलब अगर आप हर चीज को डाउट करोगे, nothing is going to happen. Right. So this is what I teach as a motivator, that seize an opportunity, work most sincerely on it and jump over, And भगवान आपका या कोई ना कोई आपका हाथ पकड़ लेगा जरूर. Right, और sir. कोई नहीं तो मैं तो पकड़ ही लूंगा. अमेजिंग सर, अमेजिंग Yeah. सर. बिकॉज जैसा कि आपने बोला, आज की जनरेशन को स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइडेंस की. बिकॉज बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल वी आर हैविंग दीज डेज. पुराने टाइम में बहुत ही अलग तरीके का लाइफ स्टाइल होता था लोगों का, बट लाइक छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में यू सी मोबाइल फोन एंड दिस सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग. सो आई फील कि आज के टाइम पे स्पेशली बहुत ज़रूरत है दैट दे नीड प्रॉपर गाइडेंस. द जनरेशन स्पेशली द जेनजी जिनको हम बोलते हैं आजकल. ये जो है ना Gen Z या Gen Next, or like in Air Force we call the sixth generation Yeah, aircrafts, that kind of a thing. Unfortunately, what is happening is कि इनको जो है शुरू से इनकी ओरिएंटेशन ऐसे हुई है
जिसके लिए वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, दैट मनी इज बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, that kind of a thing. Whereas these children, these youngsters, they have to understand that quality of life is very important, and I am very happy to tell you, you know, as I told you, as a motivator, I like to see the glass always half full. मैं वो negative पे ज़्यादा बात ही नहीं. Now there are a lot of people from good corporate jobs. So many of them are in touch with me. छोड़ के किसी ने अपना राजस्थान में फार्म हाउस बना लिया, कोई अपनी एक वो डायरी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, because people have realized कि ये पैसा and this, you know, see my book, Robotic Life, Synthetic Smiles. I want to show this to the audience also, that sir is a writer as well. And this is sir, this is your first book? This is my first book, which is already in the market. Right. And the second one is with the publisher. Oh, wow. Yeah. Amazing, sir. Amazing. So, you know, this book talks about robotic lives. Like a robot, you get up and you this thing and all. Synthetic smiles. If I ask you, how are you? You will give a sheepish, sir, it's okay. मतलब वो हंसी, वो खिलखिलाना वाला, वो जोश वाली हंसी, वो खत्म ही हो गई है. Right. So good thing is that people are realizing they are moving to, you know, tier 2, tier 3 cities, starting their own, you know, कोई farm house, कोई beehive, कोई rubber plantation and all that. And I am sure बहुत जल्दी, maybe, you know, another 10 to 15 years, people will realize, this generation will realize that money is not everything. It is very important. You know, one of my main mantras which I teach to all youngsters is that the first thing is stay rich. Stay rich, you know. Earn a lot of money by all fair means. No cheating, no bloody गपलेबाजी. और फिर उसको आप stay rich रहिए, अमीर रहिए. Because only then you will be able to follow your other passions. True. So that is also important. But these people will soon realize quality of life is more important. You know? True. Yeah. Sir, but we have seen that today's generation, they don't get, you said money is very important. But the thing is that they don't get satisfied with the amount of money they are earning. Even if they are earning good amount of money, satisfaction है ही नहीं लोगों में. जबकि हम जैसे मनी ड्रिवन हो रही है जनरेशन, जैसे हम बात कर रहे थे कि पुरानी जनरेशन के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती थी, एक ऑनर होता था व्हेन दे यूज्ड टू डू देयर जॉब. मतलब आज की जनरेशन इट्स जस्ट अबाउट मनी. You know, they, unfortunately, the thing is, किसी बहुत बड़े, you know, very wise man he has said that there is an end to human need, but there is no end to human greed. Yeah. और कबीर जी ने इसको इतना अच्छे से बोला है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह. You know, the ये जो है ना, this rat race, कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, there is no end to it. There is no end. Right. I have seen a lot of people, my own, you know, colleagues, my relatives, my friends, मेरे पास ये गाड़ी, मेरे पास ये इन्वेस्टमेंट, मेरे पास वो करते करते ही बेचारे गाड़ी करते करते ही सुबह फोन आता है कि वो रात को तो नींद में ही वो he is gone, निकल लिए. So, you know, you got to live each day happily. Right. And the generation has to realize, you know, that money is important, very important, but not everything in life. It is not. Right. It is not. So we'll talk a bit about mental toughness also. Yes. Because I feel it's a very important topic in today's time, because a lot of people are facing issues like anxiety, depression, right? So sir, just tell us something, just guide us, like what should a person do for mental toughness? Very fine. You know, मैं आपको 2 या 3 actionable, workable points बताता हूँ. आपने बिल्कुल ठीक कहा, डिप्रेशन है, कंफ्यूजन है, एंजाइटी है. फर्स्ट थिंग विच यू शुड डू इज लाइक व्हाट वी डू इन फौज, यू नो. सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर एम. आप क्या करना क्या चाहते हैं? आई वांट टू अर्न 50 करोड़, आई वांट टू बिकम दिस, आई वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड. राइट योर एम. यू विल बी सरप्राइज, जब मैं बच्चों को बोलता हूं या जो मेरे टच में है कि राइट योर एम, वो एम लिखने में ही आधा घंटा लगे, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं क्या चाहते. True. नहीं, वो सर मेरे डैडी ने बोला था ऐसे, मम्मी ने बोला था. आई टेल देम, ब्लॉक एवरीवन, टेल मी व्हाट इज योर एम.
पॉइंट नंबर 2 आई टेल देम कि ओके आपका एम हो गया मुझे आईआईटी में जाना है, अब जैसे फौज में एयरफोर्स, नाउ व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू अचीव द सेम? कोई सोचने से तो कोई ना खुश होता है ना अमीर होता है, काम करना पड़ता है। जैसे हमारे ऑनरेबल पीएम कहते हैं संकल्प से सिद्धि तक जाना पड़ता है। यू हैव टू टेक अ वो एंड देन दिस थिंग। सो सेकंड इज व्हाट एग्जैक्टली इज योर स्ट्रेटेजी टू अचीव दैट एम, राइट। सो ये 2 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेरा ये एम है, इसको अचीव मैं इतनी देर में करूंगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल में, और ये मेरी स्ट्रेटजी है। मेंटल टफनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं रोज देखता हूं, अटेंशन स्पैन इज 0। रील्स, टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट, नाउ वन डे 2020 एंड द अदर डे वन ऑफ माय क्रिकेटर फ्रेंड ही वाज टेलिंग मी कि अब एक नया क्रिकेट आ रहा है कि वो गेंद उछालेंगे हवा में और एक ही बारी में, एक ही बॉल में जिसने छक्का मार दिया मार। अटेंशन स्पैन इज 0। राइट। इसको बढ़ाने के लिए इस दुनिया में सबसे अचूक दवाई, सबसे अचूक मंत्र इज सूर्य त्राटक। इफ यू हर्ड द वर्ड त्राटक, इफ यू हैव नॉट हर्ड, गूगल इट। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द सन। सन इज द बिगेस्ट एनर्जाइजर, इल्यूमिनेटर इन दिस वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड में। Agreed. आपको रोज सूर्य के सामने, सूर्य देवता के सामने आंख में आंख मिला के कम से कम 5 या 10 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा। और वो जो ज्योति है सूर्य की, वो आपके यहां त्रिकुटी के बीच में आ जाएगी। When you close your eyes, you will feel all illuminated. अटेंशन, अगर आप ये 5 या 10 दिन कर लोगे ना, you will find कि आप काम होते जा रहे हैं, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता जा रहा है। सो त्राटक, प्लीज गूगल इट, फाइंड आउट। त्राटक कई तरह का होता है। आई रिकमेंड अ सिंपल एंड द बेस्ट सूर्य त्राटक। डू दैट। और उसमें ये कोई कंपल्सरी नहीं कि सर मैं तो लेट उठता हूं, मैं लेट उठती हूँ, या नेवर माइंड। व्हेनेवर यू गेट अप, जब जागे तभी सवेरा, you have a look at this thing. So for mental toughness, for increasing your attention span, that is very, very, very important. Very, very important. Okay. Yeah. Sir, like as you mentioned in between, you were saying कि लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। Like you mentioned with an example, cricket का example है ना, टेस्ट क्रिकेट से अब T20 and then अब ऐसा हो गया है कि एक ही बॉल आ रही है। That's all. So sir, that's true. Like that's absolutely true. I feel because आजकल जो लोग हैं उनको सब एकदम से चाहिए, मतलब they don't want to work for it. उदय, इसमें देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जल्दी 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 चाहिए में, देयर इज अ सेइंग, those who often remain tense very soon they become past tense. या तो आप तैयार रहिए कि आप भूतकाल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, if you are ready for that, it's okay. चिंता चिता समान है। हाँ, now I belong to a generation, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि जिसमें जो वर्ल्ड के और इंडिया के बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, लाइक कपिल देव, ही इज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी वेयर आई वाज स्टडीइंग। We have played in the same ground. Kapil was not in the team or anything at that time. और वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वो ग्राउंड, I was a tennis player. We used to play tennis. He used to play cricket. Those people were craftsmen, artists of the cricket, Right. So there is no जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होता, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा जान मारनी पड़ती है, खुद मरना पड़ता है तभी स्वर्ग मिलता है, otherwise you don't get anything. Right, sir. Sir, also you need a proper strategy for it, because nowadays we see a lot of people saying कि अच्छा we'll go with the flow, we'll see what happens. So sir, we see this thing happening a lot these days. So even when you're in army, you have that battlefield strategy, and that is needed in your life as well. So what do you have to say about that? लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो विद द फ्लो नहीं, अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा। आप यू विल हैव टू स्विम अगेंस्ट द फ्लो। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू डू इट योरसेल्फ, टू ट्राई इट आउट योरसेल्फ, वर्क हार्ड फॉर इट, और फिर जो मिलता है ना उसका आनंद ही और है, काइंड ऑफ अ थिंग। सो टेल मी मोर अबाउट your second innings, which is you being a motivational speaker now after retirement. Tell me a bit more about that. How are you inspiring lives?
Uday, I'll tell you, what happened was that, as I told you, you get a very decent retirement package once you retired from the Air Force, Virtually your all worries are over, children are settled, everything is done. I used to sit at home and just wonder कि अब मैं जिंदगी में करूं क्या आगे. अच्छा, इंसिडेंटली मैं आपको एक और चीज बताऊं. आई एम अ ग्रेट सपोर्टर. इनफैक्ट मैंने एक पूरा वो एक क्लब चलाया हुआ है. सीनियर सिटीजन एज शुड बी रेज टू 70. ये 60 ईयर सीनियर सिटीजन विटिजन और वो कह के सिंपैथी बटोरना कि हम नथिंग डूइंग. मिनिमम 70. Life expectancy is more, medicines are beautiful, people are fit, तो I used to wonder कि मैं 57, 56 की एज में रिटायर हो गया. अच्छा. तो अभी तो पता नहीं कितने वो आ गया, तो what should I do? Of course. And that was the time, suddenly, one day I read an article by a very good neurosurgeon. He said that Alzheimer, Parkinsonism, anything which is to do with your brain mainly happens because your brain is unoccupied. वो कहते हैं ना empty brain devil's workshop. वहां से मैंने start किया कि what can I do? So first thing I did was, because I was very good in writing, I started writing my book. Okay. I finished that book which is here in front of you. Right, sir. After that, when I was in the Air Force, I have done a lot of courses. I did my physical training course from Air Force. Then I did my basic commando course, and then so many other courses in which we were taught a lot of exercises, weight training and all that. Right. So I revived myself as a gym trainer, Okay. And today in NCR, I think I would be the only, or maybe I don't know, 68-year-old gym trainer. Wow. If you see my YouTube channel. I've seen that, sir. I've seen you skipping and I was like, amazing, sir. So, I started doing that. Yeah. Then just around month and a half back, I started my own YouTube channel. Okay. Which is my platform to meet the people, to motivate them, to counsel them. Because I feel कि इस country में इतने talented बच्चे वो unfortunately किसी गांव में, किसी remote में कहीं पे है. उनको armed forces में join करने के लिए, guide करने के लिए कोई नहीं. Right. So through my channel I do that. I guide them, motivate them. That's amazing, sir. So do you want to mention your channel name? It is Rajesh Mohan Family Motivator. Wow. Rajesh Mohan, because I target on the entire family, Right. I am a huge family man. I don't believe in any, So I feel, if the families, they stay together, बड़े, छोटे, बुजुर्ग, जैसे पहले होता था, वो एक अलग ही bonding होती है. So one more topic I wanted to have a discussion with you on was brain drain. ठीक है, sir. Like I was in Australia. I lived there for 5 years. Came back to India. But like I see that a lot of people over here, they feel the life in abroad is much better than life in India. Like they feel there are a lot of more opportunities over there and they feel like, okay, we'll settle back over there. But sir, I have a very interesting story to share with you before that. So sir, I was leaving for Australia and बीच में मैं after 6 months I came back, like जैसे vacation में, you come back and then I was flying back again. तो उस टाइम पे क्या हुआ, I met an immigration officer. Okay. ठीक है, तो सर what he said to me was like actually that thing that touched my heart उस टाइम पे. Like that's not the reason why I came back, but still like that was always there, like what he said to me. So he was like, he saw my passport, saw my visa. अच्छा ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, सेटल होने वाले हो क्या वहाँ पे? मैं कहा अभी देखते हैं, सोचते हैं. He was like, वापस आ जाना यार, बहुत ज़रूरत है देश को तुम लोगों की. Yes, wonderful, बिल्कुल. He was absolutely right. He was absolute. Well, उदय, ये कितना लंबा टॉपिक है कि इस पे we can do another podcast, because all I can tell you is एक मूवी आई थी बहुत पहले, काबुली वाला उस मूवी का नाम था. एक्चुअली काबुली वाला इज अ वेरी फेमस स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. उस मूवी में एक गाना था, ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे प्यारे चमन. नाउ it is basically that only. Maybe I go, abroad. My daughter lives in Singapore, as I told you. I meet a lot of people,
अंदर से सारे के सारे इंडिया को मिस करते हैं, ट्रू। सारे के सारे। वो पंजाब के तो यू नो आई मीन वन ऑफ ओके आई मस्ट क्विकली टेल यू वन ऑफ माय एयरफोर्स फ्रेंड्स यू नो लाइक फ्रॉम एयरफोर्स द डेलीगेशंस कीप ऑन गोइंग अब्रॉड, different strategic collaborations are there. So one of my close friends, Air Force delegation went to Paris, it went to France, so they were stationed in Paris. So he says कि हम वो आईफिल टावर के सामने those knickknacks जो बेचते हैं छोटे मोटे सोवेनियर्स टाइप, राइट। we were buying that और वो ऑब्वियसली अपना हिंदी में इंग्लिश में बात कर रहे थे, पंजाबी में बात कर रहे थे। कहता पीछे से एक वो हिप्पी टाइप का आदमी ऐसे बाल वाल और वो बैठा हुआ, और सर जी साढ़े तो भी कुछ ले लो। He was from Punjab. तो these officer he told me कि यार हम उसको ऐसे जप्फी डाल के मिले, वो ऐसे मिला हमें, और सर साढ़े नाल भी गल कर लो। What I mean is, to cut the long story short, everyone misses it. ट्रू। Unfortunately or fortunately, up to things are improving tremendously. India is now galloping ahead. Viksit Bharat, everything is happening. 100% सर। Opportunities ज्यादा आ रही हैं। बहुत। बट वो था एक जमाना कि जब एक ट्रेंड सा था कि लोग जो है, अब आई डोंट थिंक कि लॉट ऑफ यंगस्टर्स थिंक ऑफ दिस, पीपल लाइक टू सेटल इन इंडिया ऑल्सो, बट स्टिल एज यू राइटली सेड, ब्रेन ड्रेन इज गोइंग ऑन, एंड यू योरसेल्फ गेव द आंसर दैट इमिग्रेशन ऑफिसर टोल्ड यू कि इंडिया की आपकी तो जरूरत है इंडिया में। राइट सर। दैट इज व्हाट इट इज। बिकॉज सर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर देयर, और मेरा कोई एक फ्रेंड ऐसा नहीं है, लाइक इफ आई हैव लाइक 10 क्लोज फ्रेंड, लाइक 9 to 10 क्लोज फ्रेंड्स, सारे के सारे वापस आना चाहते हैं इंडिया। दे आर ऑल लाइक वी वांट टू कम बैक। एंड सर आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, दे गो अब्रॉड बाय टेकिंग लॉट ऑफ लोन्स, and then they are trapped over there also. That also happens. Like I've met a lot of people who are like, यार हमारा ये सीन ख़त्म हो तो हम तो भागे हैं इंडिया, हम तो जाना चाहते हैं, हम तो यहाँ पे आके फंस गए हैं। ऐसे भी लोग मैंने सर देखे हैं, ऐसे भी लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पे। तो ऐसा बहुत मिथ भी है लोगों को यहाँ पे, देखा देखी में बहुत लोग चले जाते हैं कि हमें जाना है बाहर और वहाँ सेटल होना है। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रिविलेज्ड वंस, बट ऐसे भी लोग हैं who belong to lower middle class or middle class who are like who take a lot of loan and then they go abroad and then they are like now we are trapped, we want to go back but we can't go, like we can't come back to India. That also happens. Yeah. You must be knowing, and I must tell you because I have served virtually across the country. Air Force gives you an advantage कि कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, कभी कहीं। गुजरात में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पे कोई यंगर जनरेशन है ही नहीं। दैट ओल्ड कपल वो गुजरात में बड़ा अच्छा लगता है, वो झूला होता है, वो बेचारे वहां बैठे झूले पे झूल रहे हैं, तो हम लोग आते जाते उनसे केम छो, मजा में छो, वी यूज्ड टू, दे हैड नो आंसर बिकॉज एवरीवन इज गॉन आउट। सो इज ट्रू विद पंजाब एंड सो मेनी स्टेट्स। ये जो एक वो देखा देखी जो एक अंधी जो दौड़ है ना, and as you rightly said, people take loans, they sell their land, they sell their jewelry, and anyway, I am nobody to judge anyone because I don't believe in judging anyone, but all I can say is कि एक बड़ी पुरानी saying है, जो सुख छज्जू दे छुबारे हो ना बल्ख ना बखारे। So come to your chubara, have a good time, छज्जू के चुबारे पे आ जाओ, have a good time here. Absolutely, sir. So sir, what would you like to say to people and how would you like to motivate them to join Indian Army? Yes. You must realize one thing. One of the greatest motivators in life, which can give you a high and a USP which nothing else can give you, that there is a purpose to your life, कि आपके जीवन का कोई मकसद है। वो पर्पस जैसे आपको आर्म फोर्सेस में मिलेगा वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। उसके अलावा आपको एक्सेलेंट पे पैकेज, गुड सैलरी, एक्सेलेंट वर्क एनवायरनमेंट। आप कभी हमारे कैंटोनमेंट्स में किसी दिल्ली में है हमारे एयरफोर्स स्टेशन रेस, यू गो एंड सी स्पिक एंड स्पैन टाइडी दिस थिंग, राइट, all kind of facilities,
post-retirement medical, post-retirement canteen services, pension, blah, 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 club activity, everything. And during the service, you have an excellent career. Right. Postings here, posting abroad. पैसा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. अब तो सर पैसा बढ़ा भी दिया है, आई थिंक. बहुत ही अच्छा हो गया. विद द न्यू पे कमीशन अब और भी अच्छा हो जाएगा. लेकिन वही है ना कि आप में वो होना चाहिए, सूली पे चढ़ने का दम होना चाहिए. दैट काइंड ऑफ थिंग. ट्रू सर. I would, appeal to all the young boys and girls listening to me that you must join Indian Army, Air Force और Navy. इसके लिए सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है. अदरवाइज कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं. इफ यू गो टू माय चैनल, माय डिटेल्स आर देयर, एंड आई गिव ऑल दिस कोचिंग, ऑल दिस ट्रेनिंग एब्सोल्युटली free, so that some people are motivated to join the army. So please do that. Okay. थैंक यू सर. सर आफ्टर मीटिंग यू आई ट्रूली फेल्ट ये चीज़, जो कहावत है ना, कहते हैं कि द सोल्जर नेवर रिटायर्स. I personally feel that thing. Thank you so much, sir, for coming. It was an absolute honor to have you with us today. And sir, जाते जाते बस कुछ एक छोटी एडवाइस और आप देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, एडवाइस नहीं, मैं जाते जाते आपको 4 लाइनें पोइट्री की सुनाऊंगा. बिल्कुल सर, हो which is an advice also. Yeah. And वो एडवाइस इसलिए जो मैंने लीप ऑफ फेथ की बात की थी, कि आपको जीवन में कूदना ही पड़ेगा. आपको whomsoever you believe, whether you believe in God or Jesus, जिसमें भी आप मानते हैं, ये अपने आप में उस पे फेथ रख के कूद जाइए. और वो कूदेंगे तो आई एम श्योर आपका हाथ कोई ना कोई पकड़ लेगा. और उसके बाद आप बोलेंगे, मुझे मंजिलें भी सहज हो गई, लो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए. So your life will be illuminated. It will be full of dazzling, sparkling life, Amazing, sir. Yeah. Absolutely amazing, sir. So thank you, sir, again. And thank you so much, guys, for watching. With this, before ending the podcast, I would just like to request you guys to please like, share, and subscribe. And with this, we'll end the podcast. Thank you so much, guys. Jai Hind. Jai Hind, everyone.